Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 9 of Software Design and Architecture. Before I start my today's lecture discussion, I would like to give you a little bit recap about our last lecture. So students, what we discussed in our last lecture, if you remember, we go through from the understanding of software design and we see how design is important and how the system will perform its functions. We see this in the design phase, and then we see how requirements are specification was about and design is about. And we see there in the requirement specification phase we are concerned with what the system will do, while in the design phase we are actually concerned about how the system will perform its functions. And then we see different kind of challenges being faced by the design, and then we see some characteristics of a good design and bad design, and we see the differences between the good design and the bad design. So after it we see the different levels of software design, and then we also discuss the main differences between the architecture design and the detail design. And then we also see architecture is actually concerned with the non-functional requirements, and design or detailed design is actually concerned with the functional requirements. And then we see the motivation of architectural design, and then students, I ask some questions to judge how much you understand about the design phase, and I ask different questions with you, and I also provide you the answers of those questions. Like I ask you different questions like where does architectural design comes from, like who is responsible for developing the architectural design, and I also asked why is software architectural design is so important. And then I also asked when is software design is actually conducted in the software development life cycle. And then I also asked what is the outcome of the software architecture design, and at the end I also discuss a diagram which actually shows the software architectural context. And at the end, students, if you remember, I gave you a real world case study for self study, Ariane 5 flight 501, in which I say it actually causes a design error in this project which causes for the failure of Ariane 5. And I said to all of you, you must go through from this case study and you have to see this case study in terms of design errors. So I hope so all of you students will be go through from this case study as well. So let's, it's all about our today's lecture, last lecture's discussion. So students, let's start formal discussion of our lecture number 9. So here are the brief objectives of our today's lecture discussion. We will see how software design is actually carried out in the SDLC, and then we move towards the more technical discussion of software design process, and we will also see the different process activities involving in the design phase. And then we see the different architectural guidelines which are necessary to follow, and then we will move towards the different factors that affects our design. And at the end of this lecture we see how software architecture actually bridges the gap between the requirement and the implementation phase. So these are the objective of our today's lecture discussion. So let's start with the design. As we see, design phase is the second phase in software development life cycle, and it is the phase where we concerned with how the system will perform its functions. And we can't move directly to design phase because we must need to understand what the system will do before we directly jumps into the design phase, which actually concerned about the how the system will perform its functions. So students, you first have to
understand what the system will do in your requirement analysis and gathering phase, and after it then you can move towards a design phase where you actually concerned about how the system will perform its functions. In software engineering, design basically focuses on the four major areas, or it has four major concerns: data, architecture, interfaces, and the components. These are four major concerns of any design involving in the software engineering context. So students, let's move towards the more technical discussion of the design process. So students, here in this diagram you can see that these are the design process activities which actually starts from the requirement specification, and in the layer 2 you can see the design activities which actually ranges from the architectural design to algorithm design. And there are six relevant design activities like architectural design, abstract specification, interface design, component design, data structure design, and the algorithm design. And the end we get some design products which ranges from system architecture level to the algorithm specification. Now let's discuss this design process activities in more detail. So students, you can see in this diagram with the help of arrows, a specification for the next stage is the output of each design activity. आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से हमारी डिज़ाइन प्रोसेस की एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। एस आर एस डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से आया वो एज एन फीड इनपुट किया जा रहा है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में एंड एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में। एंड नाउ फ्रॉम दिस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन we get the system architecture, and now SRS document and the system architecture phase it serves as the input for abstract specification, and now from this abstract specification we get the software architect specifications which now acts as the input for interface design, and for the interface design we get the interface specification. Now this design and specification will now serve as the input for component design, and now this component design gives us the component specification, and so on. You can see that the each design activity give us a design product, and this design product input to the next design activity as well. So let's more discuss this design activities in detail. So students, a specification for the next stage is the output of each design activity. You can see in this figure as well. So basically this specification may be an abstract specification which actually aims to produce the clarify the requirements, or it may be specification of how part of the system is to be realized. So uh, as द डिज़ाइन प्रोसेस कंटिन्यूस, जैसे जैसे हमारे पास डिज़ाइन प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है फर्दर मोर डिटेल्स की तरफ, दी स्पेसिफिकेशंस बिकम मोर डिटेल्ड। ये स्पेसिफिकेशन मोर डिटेल में हम इसको ब्रेक डाउन करते जाते हैं, एंड द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस डिज़ाइन एक्टिविटीज़ आर प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन of the algorithm and data structure. So students, the specific design process activities are listed here. So let's discuss these activities one by one. So the first design activity is architectural design. So students, in architectural design, actually the subsystems making up the system and their relationships are identified and documented in the architectural design. Subsystem की जो making है एंड उनका जो रिलेशनशिप है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और डॉक्यूमेंटेड किया जाता है इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर। एंड नेक्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। अब इस एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर फॉर ईच सब सिस्टम एंड एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ इट्स सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट्स अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड। अब हर सब सिस्टम के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, जो भी वो सर्विसेज या कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट इज़ प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर उसको ऑपरेट करना है, तो इस सब कंसर्न को देखा जाता है एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर। एंड नाउ द नेक्स्ट इज़ इंटरफेस डिज़ाइन। इन द इंटरफेस डिज़ाइन लाइक फॉर ईच सब सिस्टम
द इंटरफेस विद अदर सब सिस्टम इज़ डिज़ाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर हर सब सिस्टम के लिए जो अदर सब सिस्टम के साथ इंटरफेस है उसको डिज़ाइन किया जाता है एंड इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, और इसको डॉक्यूमेंटेड भी किया जाता है। सो द इंटरफेस specification must be unambiguous as it allows the subsystem to be used without knowledge of the subsystem operation। तो जो हमारे पास इंटरफेस की स्पेसिफिकेशंस हैं वो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुअस मीन अ वन थिंग कांट डिपिक्ट द two different meanings for the same thing. It is called the ambiguity. So our interface design must be unambiguous क्योंकि ये अलाउ करता है सब सिस्टम को जिसको हम विदाउट सब सिस्टम के नॉलेज के ऑपरेशंस के बगैर ही यूज़ कर सकें। सो दैट्स वाई आवर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन मस्ट बी अनएम्बिगुअस। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट डिज़ाइन। एंड नाउ different services are allocated to each component and the interface of these component are designed। तो कंपोनेंट डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं, सर्विसेज को एलोकेट करते हैं कंपोनेंट को, और जो हमारे पास इंटरफेस है इन कंपोनेंट्स को हम प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं। एंड द सेकंड लास्ट वन इज़ डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन। बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो हम यूज़ करते हैं सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिज़ाइन के अंदर मोर डिटेल स्पेसिफिकेशन के अंदर। सो वी कैन से दैट द डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन आर डिज़ाइन इन डिटेल एंड स्पेसिफाइड, and at the end we get the algorithm design। So students, the algorithm used to provide services are designed to detail and specified। जो algorithm है हम यूज़ करते हैं जो हमें services जो हमने डिज़ाइन की हैं डिटेल में, और उनको स्पेसिफाई करता है एल्गोरिथम का डिज़ाइन। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मोर एब्स्ट्रैक्ट लेवल details about these different design activities, and you can see that these different design activities ranging from the architectural design to algorithm design, and for each design activity we get a design product which ranges from the system architecture to algorithm specifications। And now all of these activities in abstract manner are explained in the next slide as well। So all of these activities what actually concerned about these design activities are listed here in the red font. You can see that uh, architectural design is basically concerned with the modules and their interrelationship, while abstract specification is concerned with the services of each subsystem and their constraints under which they are going to operate, and the interface design is concerned with to develop the interface to other subsystems of the system, or it may be outside the environment as well. And the component design responsibility is to provide services and allocate these services to each component and also design their interfaces as well. And the second last is data structure design, and the data structure to store manipulate data, and the at the end is algorithm design, which actually used to provide services which are going to operate on the data. And now students, uh, we can say that the last two stages of design, data structure and the algorithm design, they may be delayed until the implementation process. If we utilize an exploratory approach to design is used, the system interface may be designed after the data structure have been specified, or the abstract specification stage may be skipped। जो abstract specification की stage है हम उसको भी skip कर देते हैं यूजुअली उन projects के अंदर। ये ज़रूरी होता है जहाँ पर हम क्रिटिकल सिस्टम का डिज़ाइन कर रहे हो। सो वी कैन से दैट द लास्ट टू स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन which is data structure and algorithm design may be delayed until the implementation process। So students, these are the details of these different design process activities। So now let's discuss some software architecture level design guidelines। So here are the different guidelines we must follow before we start our software architecture। So students, let's discuss these well understanding design guidelines। So number one point is think of what to do before thinking of how to do। So this statement is well understand। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें करना क्या है। जो हम अपने रिक्वायरमेंट वाले फेज़ में एनालिसिस एंड गैदर करते हैं
हमें डायरेक्टली डिज़ाइन फेज पे जंप नहीं करना, जो हमारा हाउ पार्ट है कि हमारा सोल्यूशन जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं. सो इन शॉर्ट, we must think of what to do before we directly jump to the design phase, as we know that the what part is actually is concerned with the analysis and requirement gathering phase, which we call a problem domain, and the how part is actually concerned with the design phase, which actually tells us how the system will perform its functions. So students, we can't jump directly from what part to the how part, which actually says that we can't skip our requirement analysis and gathering phase, because we can't build a good design until or unless we understand what the problem is actually is. So basically, you can see that we need to think about requirements before we directly jumps towards a design. So this point summarizes that functional and non-functional requirement should be identified, कि हम functional और non-functional requirement को पहले identify करें, verify करें and उसको validate करें before the architecture and detail design work is done. So हम उससे पहले क्या करते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि उससे पहले हम आर्किटेक्चर को और डिटेल डिज़ाइन के वर्क को डन करें. सो यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन टू कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स विच हेल्प्स अस टू अवॉइड द नीड of overhaul the system design in latest stage of software development life cycle. So students, what does it mean? So you can conclude that we must think about the requirement analysis and gathering phase, what the actually problem is. We don't need to directly jump by skipping the problem domain part, and we don't need to skip this problem domain part, and we can't move or directly jump to the design phase, because it is very important for us to understand what the problem actually is before we going to developing the solutions for our problem. So here is about all about the point number 1. So let's discuss the point number 2, which is think of abstract design before thinking of concrete design. So what does it mean? It means कि हमें हमेशा स्टार्ट करना है ऑलवेज विद एन एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, जो स्पेसिफाई करता है डिफरेंट इंटरफेसिस को, कंपोनेंट्स के एंड उनकी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स को. सो मल्टीपल लेवल की एब्स्ट्रैक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर वो ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज स्टार्ट विद एन एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन दैट स्पेसिफाइज द इंटरफेसिस ऑफ कंपोनेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स. We can also use multiple level abstractions if we need it or if there is necessity of it. So we need to make implementation decision based on the abstract interfaces instead of the concrete ones. तो जो हमें implementation level के decisions हैं वो बेस करने चाहिए abstract interfaces के ऊपर, ना कि हमें concrete डिज़ाइन के ऊपर फोकस करना चाहिए. ओवर मेन इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन जो है वो बेस करता है एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसिस के ऊपर, बिकॉज द रीज़न इज़ जो एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसिस हैं वो मोर स्टेबल हैं अभी. सो दे आर द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सर्विस रिक्वेस्टर्स. सो it's all about the we must think of abstract design before we goes into concrete design, because abstract design are more stable. That's why the more implementation decisions based on the abstract design and interfaces. And the third point is we must think of the non-functional requirements early in the design process. We also discussed this part in our last lecture. If you remember, our architecture is basically our design phase is basically comprises of two activities: architectural design and detail design. And architecture design is actually concerned with the non-functional requirements. So that's why you know that after the SRS document we first build over the architectural design, in which we more think about the non-functional requirements. So that's why we must think about the non-functional requirements early in the design process. So like when you map functional requirements to architectural design, you should consider non-functional requirements as well. Communicate with stakeholders and documented their preferences for quality attributes. So students, it is well understood that if it is not possible to find a design that meet all quality attributes, so you should must try to find the right balance of quality attributes and consider heterogeneous type of architecture which is more flexible, which can easily accommodate the change. So
It's all about the non-functional requirements which must be considered earlier in the design process, which actually consider in the architectural part, software architecture part, and in the detailed design part we are actually concerned with the functionality of the system as well. So students, let's move toward the next phase, which is the we must think of software reusability and extensibility as much as possible. This is the fourth guideline of software architecture. So students, what does it mean? ज़्यादातर सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए इट इज़ लाइकली डैट जो हमारे पास न्यू फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम उसके अंदर एडिट करें, विल बी एडिड आफ्टर द सिस्टम आर डिप्लॉयड, कि ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है मोस्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कि हम उसके अंदर जो न्यू फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सिस्टम के सॉफ्टवेयर के डिप्लॉय होने के बाद करें. सो द रीज़न इज़, तो आपको ये कंसिडर करना है कि हम रीयूज़ कैसे कर सकें एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को टू इंक्रीज़ द रिलायबिलिटी, कि हम अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो. सो we always try to make new software extensible in the future as well. So students, we can conclude about this point, which is related to the reusability and extensibility. We can say that for most software systems, it is likely that new functionalities will be added after the systems are deployed. So that's why you need to consider how to reuse existing software components to increase the aspect of reliability and cost effectiveness of the new system. So that's why we always try hard or try our level best to make software more extensible in the future as much as can be possible. So it's all about the concept of reusability and extensibility. And the next point is about the cohesion and coupling. So students, cohesion and coupling are the basic two measures which by which the quality of a design about any module and their interactions among can be measured. कोहेजन एंड जो कपलिंग है ये हमारे पास बेसिकली दो मेजर्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी मॉड्यूल के डिज़ाइन की क्वालिटी को जज कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं. सो बेसिकली कोहेजन एंड कपलिंग आर द टू मेजर्स बाय विच वी कैन एस्टिमेट द क्वालिटी ऑफ any quality about the design of a module and their interaction as well. So a good design must have a minimized coupling and high cohesion. So students, most of you don't know about the cohesion and coupling. So I will elaborate a little bit about the cohesion and coupling in the in the in the other lecture. We will discuss in detail about the different types of cohesion and coupling with the help of some examples as well. So for the time being, you must know that cohesion is basically the degree of interdependability within elements of a module, while and a cohesion must be high and coupling must be low, and while the coupling is the interdependability among modules of a program. So we can say that coupling is the interdependability and the cohesion is the interdependability within elements of a module. So a good program should have minimized coupling and high cohesion. जो एक अच्छा प्रोग्राम का डिज़ाइन है उसकी कपलिंग कम से कम होनी चाहिए और कोहेजन हाई से हाई होनी चाहिए. जो कपलिंग है दो डिफरेंट फंक्शंस के जो एलिमेंट्स अगर आपस में डिपेंड करें तो इसको क्या, डिफरेंट फंक्शंस के एलिमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करें तो इसको कहते हैं कपलिंग, और कपलिंग कम से कम होनी चाहिए. एंड कोहेजन, अगर एक फंक्शन के एलिमेंट्स इटसेल्फ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, विद इन फंक्शन डिपेंडेबिलिटी हो, तो दिस काइंड ऑफ डिपेंडेबिलिटी को हम कहते हैं कोहेजन, और कोहेजन मस्ट बी हाई. सो दिस पॉइंट वी कैन समराइज दैट अ गुड डिज़ाइन शुड हैव मिनिमाइज कपलिंग एंड हाई कोहेजन. एंड द नेक्स्ट इज tolerate refinement of design. So students, this axiom or this saying is very clearly states that about the refinement of design. So we can say that never expect to have design completely perfect in one step. हमें कभी भी ये expect नहीं करना चाहिए कि हम अपने डिज़ाइन को एक स्टेप में ही कंप्लीट कर लेंगे. सो इट्स अ आइटरेटिव प्रोसेस. हमने पीछे काफ़ी डिस्कस किया कि ये जो डिज़ाइन है इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, यू मे नीड टू यूज़ प्रोटोटाइपिंग एंड आइटरेशंस टू रिफाइन दैट डिज़ाइन. सो आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि आप डिज़ाइन को कम्प्लीटली एक ही स्टेप के अंदर
समराइज़ कर लेंगे। यू मे नीड टू यूज़ प्रोटोटाइपिंग, आपको प्रोटोटाइप करने की यूज़ करने की ज़रूरत है, और आप डिफरेंट आइट्रेशंस को यूटिलाइज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को रिफ़ाइन करने के लिए, मोर कंप्लीट करने के लिए, मोर क्लियर एंड कंसाइज व्यूज़ को डिपिक्ट करने के लिए। सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द प्रोटोटाइपिंग एज यू already studied the subject of software engineering, where you will learn about the prototyping approach as well. And the last and the seventh point is, we must avoid the ambiguous design over the detailed design. So this guideline is self-explanatory as well. Ambiguous mean the one word or one design should not give us the two different meanings. So ambiguous design lacks of constraints, and over detailed design restrict implementation. तो जो हमारे पास एम्बिगुअस डिज़ाइन है उसके अंदर हम डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को लैग कर रहे होते हैं, हम अपने कंस्ट्रेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते, वाइल इन ओवर डिटेल डिज़ाइन हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। सो दैट्स वाई हमें ओवर डिज़ाइन को और एम्बिगुअस डिज़ाइन को और ओवर डिटेल डिज़ाइन को अवॉइड करना है। बिकॉज द रीज़न इज़ दिस कि जो एम्बिगुअस डिज़ाइन है इसके अंदर हमारे कंस्ट्रेंट्स लैग कर रहे होते हैं, और ओवर डिटेल डिज़ाइन जो है ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर। सो दैट्स वाई वी नीड टू avoid from ambiguous as well as the over detailed design. And now the last point is that design should be structured to accommodate change. This point is very well communicated here, ये well understandable है, as it is depicting our design must be flexible enough. If there is changing in requirements, we don't need to change about our design must be enough flexible or scalable so that it can easily cope with the changing requirements. सो व्हाट डज इट मीन, स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, तो इन केस ऑफ एवरी चेंजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमें अपने डिज़ाइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर डिज़ाइन मस्ट बी फ्लेक्सिबल और मस्ट बी इनफ स्केलेबल कि वो ईजिली न्यूली रिक्वायरमेंट्स को अकोमोडेट कर सके, ना कि हमें अपने डिज़ाइन को चेंज करना पड़े। सो दैट्स वाई आवर डिज़ाइन मस्ट बी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर सो दैट इट कैन अकोमोडेट चेंज. So all of these factors which we all of these are the 8 guidelines which a designer must follow before he is going to develop a software architecture. I hope so all of your concept about these 8 guidelines will be clear. So now students, now we will discuss some factors that actually affects the design. स्टूडेंट्स हम कुछ ऐसे जनरल लॉज ऑफ डिज़ाइन के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे डिज़ाइन को अफेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने क्या देखी, वो गाइडलाइंस देखी जो एक डिज़ाइनर को फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब हम वो पॉइंट्स को, उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे डिज़ाइन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स लाइक total time, value, resources, synthesis, iteration, change, relationship, service and competence. Students, you must listen these points very carefully. I will provide you all the detail about this point as well in the coming slides, so you put more concentrate on these slides. So let's discuss these factors which affects our design one by one. So let's start with the first one, which we call the total, or we call it the principle of totality. So what does it mean कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी है ये फैक्टर हमारे डिज़ाइन को कैसे इफ़ेक्ट करता है। सो वी कैन से दैट अबाउट दिस पॉइंट कि ऑल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड एंड मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज मच थ्रू आउट अ डिज़ाइन टास्क. सो दिस सेइंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी स्टेट्स दैट हमें क्या बताती है कि जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है होल डिज़ाइन के प्रोसेस को, होल डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स को पूरे के पूरे डिज़ाइन प्रोसेस में क्या करता है, अफेक्ट करता है. मोर ओवर जो इसके एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के, वो इंटर रिलेटेड हैं और उनको आप ट्रीटेड करें एज अ होल ड्यूरिंग डिज़ाइन. सो वी कैन से दैट design requirements are the most important factor that affect the whole design process, and these elements of design requirements are interrelated and it should be treated as a whole during the design phase. And there are this is very much true about the software design. There is some relationship between software requirements very significantly, और समटाइम यूज़र रिक्वायरमेंट्स कन्फ्लिक्ट टू वन अनदर. हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं
conflicts भी कर रही होती हैं. We also need to prioritize requirements and we also need to take some design decisions as well. So let's discuss these 3 points in more detail about requirement conflicts, prioritization, and the design decisions. Basically, students, uh, relationship between software requirements vary significantly. Sometimes user requirements conflicts to one and another. It has been widely recognized that conflict resolution and requirement prioritization must be considered as an essential part of requirement analysis. So this principle of totality also explain us that we must consider different design decisions which must be made on the basis of deep understanding between the relationship of requirements. So what does it mean? स्टूडेंट्स समटाइम जो हमारे पास यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं, और ये हम वाइडली ये रिकॉग्नाइज भी किया गया है कि जो कन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करते हैं रिक्वायरमेंट्स के, और रिक्वायरमेंट का जो पीरियोडाइजेशन करते हैं, ये एक एसेंशियल पार्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज का. एंड दिस जो प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं हमें ये भी बताता है कि जो डिज़ाइन डिसीजन है वो हमारा किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, किसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसकी बेस के ऊपर हमारा डिज़ाइन डिसीजन बेस कर रहा होता है. सो we can say that the principle of totality is about all design requirements are always interrelated and always must be treated as a throughout a design task. So students, it's all about the principle of totality. And now the next is principle of time. तो व्हाट इज़ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ टाइम? प्रिंसिपल ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि हमारा जो डिज़ाइन है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ मच इट यूज़र फ्रेंडली, वो कितना रिसोर्स इंटेंसिव है. सो व्हाट डज इट मीन? तो this principle is actually about the time. Time is the important factor in the design phase, because let's consider an example. For example, I say 20 years ago a program that interacts with the user through command line input output may be considered a user friendly if it gives prompts of user input and display output in the form of dialogues. Now, with the wide spread of GUI based interfaces, which we also call a graphical user interfaces, such computer human interaction can hardly be considered a user friendly in nowadays. So, what does it mean? I am saying that कि आप ये एग्जांपल लें कि 20 साल पहले एक प्रोग्राम जो जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू कमांड लाइन CLI इंटरफेस के साथ अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, तो उस वक्त शायद वही यूज़र फ्रेंडली कंसिडर किया जा रहा था. लेकिन आज के टाइम के ऊपर जहाँ पर और बहुत सारे GUI बेस्ड प्रोग्राम्स हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उस टाइम 20 ईयर्स अगो तो वो डिज़ाइन जो था हमारे पास वो तो कंसिडर किया जा रहा था यूज़र फ्रेंडली. लेकिन आज की एज में, आज के टाइम पे जहाँ पर इतनी GUI बेस्ड एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो आज के दौर में हम उस डिज़ाइन को कभी भी यूज़र फ्रेंडली कंसिडर नहीं करेंगे. सो द बात करने का पर्पज़ ये है कि द डिज़ाइन इज़ एक्चुअली कंसर्न अबाउट द टाइम. इट ऑल अबाउट द टाइम. One time a design may be more important, and with some later part or some later time this design may become unuseful. So the reason is, we can also took another example, like a program that use 10 megabytes memory will be considered too much resources. अगर एक प्रोग्राम है वो एक 10 MB की मेमोरी कंसिडर कर रहा है, हम उसको ये कंसिडर करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइज़ कर रहा है अगर हम इसको 20 साल पहले देखें. लेकिन अगर आप नाउ डेज आजकल की लाइफ में देखें, एक जो स्टूडेंट का थीसिस है वो 10 MB ईजिली कंज्यूम कर जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट टाइम टू टाइम. 20 साल पहले एक 10 MB मैटर्स अलाउड, and after 20 years 10 MB 10 MB is nothing. So therefore we can conclude about the principle of totality is that a design cannot be evaluated without taking into consideration of the times when the design was made and when the evaluation was made. तो जो भी डिज़ाइन है उसको हम कभी भी इवेलुएट नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिज़ाइन की जो भी वैल्यूएशन है ऑलवेज बेस की जाती है टाइम के ऊपर, कि इन व्हाट टाइम ऑफ यू आर इवेलुएटिंग दैट डिज़ाइन. 20 साल पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी आज की एज में वो चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है. लाइक GUI बेस्ड अभी आज से 20 ईयर्स पहले कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेसेस यूज़ किए जा रहे थे, उस टाइम पर CLI की यूज़र फ्रेंडली कंसिडर किए जा रहे थे. लेकिन आजकल के दौर में जहाँ पे GUI बेस्ड एप्लीकेशंस आ गई हैं,
तो उन कमांड एंड इंटरफेसेस को यूज़र फ्रेंडली कंसीडर नहीं किया जाता। सो सिमिलरली रिसोर्स इंटेंसिव पार्ट को हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि अगर एक 10 बाइट की फाइल एक 10 MB का रिसोर्स हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइन के अंदर बिफोर 20 ईयर्स अगो, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स कंसिडर किया जाता था। बट नाउ एट करंटली टाइम एक स्टूडेंट्स का जो थीसिस है वही 10 MB की फ़ाइल को ऑक्यूपाइड कर लेता है। सो हेयर वी सी दैट the user friendliness and the resource intensive design aspect with respect to time. So students, it's all about the concept of time. So we conclude that the design is always, or design cannot be evaluated without taking into consideration of the times when the design was made and when it is being evaluated. So the time principle, it also plays an important part in the design phase. And now the next is value. So next important factor is value. So value is basically हमारे पास characteristics है of all products have been relative to values depending upon the different circumstances and in times in which they may be used. So what does it mean? ये स्टेट कर रहा है कि जो एक प्रोडक्ट की रिलेटिव वैल्यू है हमारे पास, उसको हम लाजमी कंसिडर करते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर। लाइक हम कहते हैं कि जो वैल्यू है डिपेंड कर रही है कि किस टाइम के ऊपर आपने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज़ यूज्ड। लाइक एक चीज़ आपने 20 ईयर्स अगो डेवलप कर ली, उस टाइम के ऊपर उसकी वैल्यू और है, और 20 ईयर्स के बाद सेम डिज़ाइन की वैल्यू विल बी नथिंग। सो design also concerned about the value of the particular design, because the reason is the value may be changed with time, change with different circumstances. Like it may be adaptability for a wide range of user type and should be considered as well. So uh, we uh, we can say that it is not fixed. A good software design made 10 years ago is probably out of date and less satisfactory now because user requirements have changed and the hardware and software platforms to implement and execute the software have also changed. So students, हम ये कह सकते हैं कि जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है जो हमने 10 साल पहले बनाया, हो सकता है कि आज की डेट में वो आउट ऑफ डेट हो गया हो और वो लेस सेटिस्फैक्ट्री हो अपने क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास चेंज होती रहती हैं, और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म जो इम्प्लीमेंट किए हैं वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और विद टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, लाइक यू कैन से दैट फीचर्स दैट वर कंसीडर्ड डिज़ायरेबल ईयर्स अगो में बिकम लेस इंपॉर्टेंट। वो फीचर्स जो कुछ साल पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाएं, तो लेस इंपॉर्टेंट हो जाएं बिकॉज द रीज़न इज़ न्यू फीचर्स बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 ईयर्स पहले कुछ फीचर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोज फीचर्स हैव लॉट ऑफ वैल्यू फॉर यू, but now for the current time these features have no value for you, which you are saying that 20 years ago these features are very important for you, but now with some passage of time the newly features become most important for you. So we can say that all of these are about the value. So 20 years किसी फीचर्स की आपके लिए वैल्यू कुछ और है, फिर उन्हीं फीचर्स की 20 ईयर्स के बाद आपके लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिकॉज द रीज़न इज दिस के न्यू रिक्वायरमेंट्स आए, न्यू रिक्वायरमेंट्स न्यूली इन्वायरमेंट में चेंज हुई और आपके लिए फीचर्स की वैल्यू चेंज हो गई। सो वी इन दिस स्लाइड वी सी डैट कि जो किसी जो वैल्यू फैक्टर है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे डिज़ाइन को, एंड वी कैन आल्सो सी डैट adaptability factor we should also be considered. So adaptability, what means adaptability? So we can, designers should be aware of the user types and their purpose of use and to apply this knowledge in the design of software. So we must ensure that the adaptability for a wide range of user types should be considered as well. So the next point is the principle of resources. This point is uh, self-explanatory as well. प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स इज़ व्हाट बेसिकली डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर का जो फेज़ है और जो भी तमाम प्रोडक्ट्स के लाइफ साइकिल है, सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, मटीरियल्स पे, टूल्स पे, स्किल्स पे, अपॉन विच वी कैन कॉल। सो रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, आपने देखा कि डिज़ाइन प्रोसेस की एक्टिविटीज़ के अंदर वी हैव डिफरेंट मटीरियल्स, डिफरेंट टूल्स एंड स्किल्स आर नीडेड। सो ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड रिसोर्सेज। सो आवर डिज़ाइन इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द
resources. And like there are different development tools, like there are different random support systems. We also need some human resources, like there are also domain specific tools and different equipment. All of these are considered resources. Our design also depend upon the resources. What kind of resources? Here in the last 4 points depicts different types of resources. So this slide is self-explanatory as well. So the next point is the principle of synthesis. So students, we can say that what is actually is being in this synthesis factor is uh, this actually states that the features or functions of a product constitute a factor that affects design as the objective of design. So they actually combine together to satisfy the requirements. In software engineering, a good design must take all functional and non-functional requirements and the relationships into account as well. In software design practice, it is almost inevitable to make trade-off between desirable features and the functions as well. So we also see what are the requirements. If you remember, requirements are not wishful thinkings or not wants, it actually over necessities or over needs. So students, uh, in the synthesis part, in the point of सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और जितने भी हमारे पास फीचर्स हैं या प्रोडक्ट के, वो मस्ट हम उनको कंबाइन करें अपनी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए. सो एक्सपेक्ट जो जितने भी हमारे पास पॉजेज हैं विद एक्सेप्टेबल रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है, जितने भी हमारे पास विशेज़ हैं बीइंग इन द माइंड द रिसोर्स अवेलेबल टू मेक एंड यूज़ इट, सो वी शुड ऑल नीड टू कंसिडर अबाउट इट. सो we can conclude about this point is that features or functions of a product constitute a factor that affect design as the objective of design. So जितने भी हमारे पास डिज़ायरेबल फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनका आपस में क्या है, ट्रेड ऑफ है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड ऑफ? बेसिकली trade-off is in software engineering. A good design must take all functional and non-functional requirement and it also consider their relationship as well. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की प्रैक्टिसेस के अंदर जो हम कंसिडर करते हैं कि दिस काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ्स मस्ट बी बेस्ड ऑन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र रिक्वायरमेंट एज अ होल and we also bear in the mind that different constraints which are on the resources available. So this is all about the synthesis part. So in this part the most important aspect is there is a trade-off between the desirable features and the functions, which actually tells us the principle of synthesis. And now the next point is the principle of iteration. So the next factor is iteration. Students, we go through from this point very we go through from this point many times. We said again and again, design is an iterative process. Design is an iterative process. We can't build our design in a single iteration or a single phase. So students, you never expect to have software design completely perfect in one step. So that's why you may need to use prototyping and iteration to refine the design. So this iteration help us to change different errors, and this iteration also help us to improve the quality of our design. So the principle of iteration is all about our design cannot be perfectly in only one step. You need to different kind of prototyping, and we also go through from different iterations to refine our design more, and this refinement and these iterations help us to correct different errors, and ultimately it helps us to improve the quality. So that's why iteration also affects the affects our design. The more iteration we have, the more our design will be error free, and ultimately it leads to a good quality. And the next point is the principle of competence. So students, what is the principle of competence? Basically the principle of competence is design competence is the ability to create a synthesis of feature, like to achieve all desired characteristics in terms of the required life, like there are different values using available effective information, like competence of the designer as well. So students, what does it mean?
सो स्टूडेंट्स, डिज़ाइन कॉम्पिटेंस क्या है? हमारे पास एबिलिटी है जिसकी ये हेल्प से हम अपने जो डिज़ाइन फीचर्स के सिंथेसिस हैं उनको क्रिएट कर सकें, और जितने भी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम अचीव कर सकें अपने डिज़ाइन के अंदर. सो लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स लाइक देयर लाइक लाइफ डिफरेंट वैल्यूज़ यूजिंग अवेलेबल इफेक्टिव इंफॉर्मेशन. So these are concerned with the competence. So it also depend on the competence of the designer. So it's a competence factor which actually affects our design. So the next one is the principle of service. So students, what is the principle of service? Like जो हमारा डिज़ाइन है वो एवरीबॉडी को सेटिस्फाई कर रहा हो, लाइक वो जस्ट उन्हीं को सेटिस्फाई ना कर रहा हो जिनके लिए उसने प्रोडक्ट बनाई है. तो इजी टू मेंटेन हो, उसको इजीली रीयूज़ कर सकें, उसको हम इजीली एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ट्रांसपोर्ट कर सकें, वो इंटरऑपरेबल भी हो अदर हार्डवेयर के साथ. सो ऑल ऑफ दीज आर सर्विसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय आवर डिज़ाइन. सो हमारा जो अच्छा डिज़ाइन है वो मस्ट बी दी सर्विसेज प्रोवाइड करे किसको? एंड यूज़र्स को और स्टेक होल्डर्स को. सो जो डिज़ाइन है एवरीबॉडी को सेटिस्फाई करे, सिर्फ उन्हीं को सेटिस्फाई ना करे जिनके लिए वो प्रोडक्ट डायरेक्टली उन्होंने इंटेंशनली डेवलप किया. तो देर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, we need to consider all of these stakeholders, or what kind of services that design must be provided, like it must be easy to maintain, reusability, interoperability must be contained in these services. So that's why services are the most important factor which affects our design. And now the next is the principle of change. So this principle is also very important factor, as a change is almost very important in the software engineering. How we deal with the change, because students, we know that whenever a system is deliver in an environment, requirements are constantly being changed. Our design must be capable enough to deal with the change. So students, now your question should be, sir, if requirements are constantly being changed, why our design is not being changed? So students, what does it mean? अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर अगर रिक्वायरमेंट्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं तो हमारा डिज़ाइन क्यों नहीं चेंज हो रहा? Student, the answer for this question is the good design must be flexible enough, or it must be structured so that it can be accommodate change easily. We don't need to rebuild or reinvent that design phase. Our design must be structured or must be enough capable to deal with minor changes of which are constantly being monitored after the deployment of any system in the environment. So it's all about the principle of change. So change is always acceptable. So change is most important aspect of any design. So that's why the change is also important factors which affects our design. So if we see it in more detail, the concept of change, basically students, we can say that design is a process of change and activity, like which not only undertaking to meet the changing requirements, but it also bring about changes to those circumstances by nature of the product it creates. So what does it mean? What it's saying is that uh, consequence of design is to bring about change. So हमें always change को भी consider करना है, because as the जैसे ही हमारा सिस्टम किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हम उसको डिप्लॉय करते हैं, रिक्वायरमेंट्स कॉन्स्टेंटली इमर्ज होती हैं उस इन्वायरमेंट से. सो ओवर डिज़ाइन मस्ट बी इनफ structured, must be enough flexible, must be enough scalable, so that our design can deal with these kind of requirements constantly being changed. We don't need to refactor or reinvent our design. Our design must be enough flexible, scalable, and structured, which can cope with the or deal with the changing of requirement. This kind of design we also call a quality design, which is flexible enough to deal with the requirement changes. So students, the last one is the relationship. So design cannot work undertaken effectively without establishing good relationship with all stakeholders. Relationship is also very important. You see the different design process activities, from architectural design to till algorithm development
or implementation level, there are different stakeholders involved in this design process activities. So as I said earlier, stakeholders are anybody who is directly or indirectly affected by the system. What kind of stakeholders will be involved in the design process activities? Like customers, users, system administrators, all of these are stakeholders. We need to develop a good relationship between different stakeholders as well. So relationship is also an important factor in the process of design. And now the next is how software architecture bridges the requirements and implementation. Students, this slide is self-explanatory. We discuss a lot of time. Requirement analysis and gathering phase tells us what the system will do, and the design phase tells us how the system will perform its functions. So architectural design with the help of some box and line diagram actually help us how the system or architecture actually will look like. Architecture actually gives us the skeleton or blueprint of the system. So let's discuss it in more detail in the coming slide. From the SRS document we get the from the SRS document, which we get from the problem domain, which we call a requirement analysis and specification. From this SRS document, which is actually feed as an input to the design phase. And now this design phase, the early activity is the architectural design, where the work of box and line diagram is actually start. This diagram, which is a simple boxes and line diagram, shows the conceptual analysis model of the system. So this box and line diagram actually is a starting point for software architecture design, which actually will start from the building from the SRS document, which is actually feed as input from the requirement analysis model to the design phase. So in this diagram, students, you can see that the box and line diagram. So students, you must remember this box and line diagram does not depict any kind of semantics or does not generate any kind of meaning for software architecture design. It is only provide us the information in very abstract level, or it is the provide as a very it does not provide the information necessary for software development in the next phase. It only gives us the abstract level view of the how the system look like. And with the help of this early box and line diagram from the requirement specification and document, we draw our early software architecture design. As we see in the early use case model, before the invention of unified modeling language, there are some other language like this boxes and line diagrams are used to represent the software architecture as well. So students, you must understand these kind of box and line diagrams. Before the invention of unified modeling language, these kind of box and line diagrams does not capture the semantics, mean the meanings, does not capture the semantics of सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन. ये जो बॉक्स एंड लाइन डायग्राम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कोई भी सीमेंटिक्स को फुली कैरी नहीं करती, फुली कैरी उनके मीनिंग को डिपिक्ट नहीं करती, और ये कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती. ये डायग्राम्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फर्दर फेजेस में हम यूटिलाइज कर सकें. दीज बॉक्स एंड लाइन डायग्राम्स आर मोस्टली यूज्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. So students, in these slides what we learn, we see that how software architecture actually bridges from requirements to the implementation phase. So here we see that how box and line diagram or architecture acts as the intermediary between the requirement phase and the implementation phase. So in the requirement analysis and gathering phase, which I am saying again and again, we actually concerned with what the system will do. We need to clarify our requirements, we need to refine our requirements, while in the design phase we actually concerned with how the system will perform its functions. And this architecture level diagram, which actually in the early life of software design we build from the boxes and line diagram, actually help us to bridge the requirement and the implementation phase. It does not capture us any kind of semantics about the software architectural design, and it also does not provide us any kind of information which helps us the later design phase. So till here students, our today lecture discussion is complete. Before I
ended my today's lecture discussion. What we learned this slide, we see the different software design in SDLC. We see the software design process activities with the help of diagram, and we also look the more details of these design activities as well. And then we see the architectural design guidelines, where we see different 8 to 9 different guidelines which are necessary for the architecture engineers. And then we also see what factors can be affect our design. We also discuss these factors in very detail as well. And at the end we see how the our software architecture actually bridges the requirement and the implementation phase. So till here, students, our lecture number 9 is ended.